The point is, don't make the divine object of perception. The knower inside you is the divinity. So it cannot be seen, perceived outside, but it can be felt only. So turn mind inward. Turning mind inward, I'm not the body, I'm not all these experiences in life. Life is flood of experiences. And events are just moving. You can't hold on to any event, however pleasant or unpleasant they are. Nothing stays. However pleasant, you cannot hold on to it. However unpleasant an event, that doesn't stay, last longer. So everything is changing. What you can perceive is the changing objective world. The non-changing subjective divinity is already there, is ever present. And meditation is the journey from the changing to the non-changing. Yeah? For that we use all the gimmicks, so many tricks, because the mind is very tricky. The ego complex is so tricky, it just escapes. And that is why it is needed, the Guru's grace and Guru's stick can bring it back away from the identity the ego assumes outside to moving within, to the blissful being that we are. Sometimes it may all go just above the head. We may not get it at all. Only through the blessings, divine grace can this be attained. This again and again all scriptures say. Humility. Why humility? Why should it not be arrogant? Because in arrogance you are stiff and you are not able to go inside. In humility you are fluid. So you are able to move inside. That's why humility is emphasized so much. Acceptance. Why acceptance? Why should I accept everything? I won't accept. If you say that, okay, that forms your shield, or it becomes a barrier for you to flow into. The events are changing. Pleasant, unpleasant, unpleasant, pleasant, everything changes. And anywhere, anything you get stuck into, then that fluidity in you is lost. It is a little difficult to grasp, at the same time easy to understand also. Both. You have to examine your own experiences in this. Good. And today, the Mother Divine, Durga, is worshipped as Siddhidhatri. The name for Durga of the 9th day is Siddhidhatri, means the giver of perfection. What makes your identity very rigid is your sense of perfection. When you think you have achieved some perfection, that solidifies your ego. Solidifying ego means remaining in the limited sphere of the existence. When you don't associate yourself with the perfection, that or whatever you have gained in your life, skills you have gained, perfections you have gained, then you remain innocent, you remain supple, you remain very supple,
And the subtlety, suppleness is what the universe is all. Now, when you get connected to the universal spirit, universal energy, and you realize you are not just the limited self. Body is limited, but the consciousness to realize it's unlimited, it has to come out of that limited identity with the perfection. Perfection makes you, when the sense of perfection, I have this perfection, I know, I have attained this, I have these skills. These sort of affirmations in you or identities in you keeps you in a limited form. Also, lack of it also. If you say, oh, I am imperfect, I don't have any perfection. Any type of identifying the opposite of it, the negative side of perfection, is also detrimental to your growth. Both of these will keep you in a limited sphere. And when you realize that you don't have perfection, then you know the Mother Divine is going to give it to you. Again, you come out of that lack of perfection in you. If you think you have perfection, you have attained some things in life by your own effort, here again you realize it is the Mother who has gifted this to you. You have been gifted those skills, those perfections, and whatever you identify yourself as. Just realizing this, you become one with the pure nature of the self, the Mother Divine's consciousness. So, Siddhidhatri is the name of the Durga, realizing perfection is not by our doing, but it has been bestowed to us. Siddhis, skills are bestowed on us. Powers, any power that we have is only being bestowed to you, and that keeps you humble, keeps you supple and united with the I consciousness. आज माँ दुर्गा का नाम है सिद्धिदात्री. हमें जीवन में कुछ ना कुछ हमने सिद्ध किया है. हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ सिद्ध किया है. घर की महिलाएं खाना बनाने में वो सिद्ध हो गई, या एक टेलर है वो कपड़ा बात करते करते कैसे भी वो कपड़ा सिल लेते हैं. जिनकी जो भी कलाएं हैं वो सब उनकी प्राप्ति है. हमने जो भी प्राप्त किया है वो जब हम समझते हैं हमारी अपनी प्रयत्न से, ताकत से हमने प्राप्त किया है, तो ये अपनी अहंकार को पुष्ट करती है. तो अहंकार क्या है? असीम अनंत चैतन्य शक्ति से हमको अलग कर देती है. वही सीमा, वही अहंकार है. अब मैं इतना ही अपने आप को, मैं अपने आप को सिर्फ शरीर के भीतर जो है उतना ही समझता हूँ, और मेरा बंधु भगिनी पास आस पास के लोग हैं, इतने को ही मैं अपना समझता हूँ. तो ये सीमित कर देने वाले अहंकार, उसकी पुष्टि जब हम अपने सिद्धियों को या अपनी क्षमताओं को, अपनी प्राप्तियों को अपना मानते हैं, अपने प्रयास से किया है ये मानते हैं, तब होता है. ऐसा ही अपनी कमज़ोरियों का भी है. हमें ये कमज़ोरी है ऐसे समझ के हम बैठते हैं, तो वह भी हमारे अहंकार को नकारात्मक रूप से पुष्ट कर देता है. जब हम ये बात समझ लेते हैं, ये मानते हैं ये भगवान से दिया हुआ आशीर्वाद है, तब भी अहंकार टिकता नहीं है, तरल हो जाता है. जब अहंकार तरल होता है तो आत्म चैतन्य में स्थित हो जाता है. हाँ, नहीं तो मैंने ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, दूसरों ने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, ये सभी तो हमारे अहंकार को पुष्टि कर देते हैं. ये माया
हम इन सब से अपने आप को छुटकारा पाकर अपने आप में विश्राम करें। क्यों? भगवान दृश्य नहीं है, दृष्टा में है। ये सुनने में लगता है, कई बार समझ में नहीं आएगा, ऊपर से चला जाएगा बात। हाँ, दृष्टा भगवान तो ऐसा तो नहीं लगता, सामने तो दिखता, मूर्ति दिखते हैं, कोई दिखते हैं तो लगता है सामने दिखने वाले को ही भगवान मानते हैं। वो ठीक है, शुरू में ऐसे ही मान के चलते हैं, मगर आगे चलते चलते जब ध्यान में उतरते हैं तब अद्वैत की अनुभूति हमको मिलती है। माने दूजा कोई नहीं है। इतना प्रेम घनिष्ठ हो जाए, इतना अगाध प्रेम हो जाए, तब दूजा नहीं। ये बात हमको अनुभव में आने लगता है। इसी को अद्वैत का ज्ञान बोला गया। तो क्या जो हमने प्राप्ति नहीं की अभी तक, जो हमको भी प्राप्त नहीं हुआ, ये जान लेना, ये तो हमको ये माता है, माँ देने वाली है, इसका सब सिद्धिदात्री है। वो चैतन्य शक्ति ही दे प्राप्ति हमको। जो प्राप्त है और उसके साथ तादाद में, तब भी ये जान ले ये सब तो कृपा से है, हमारा नहीं, ये सब प्राप्ति मिली, हमारे प्रयत्न से प्राप्त नहीं हुआ, ये देवी का देन है, भगवान का देन है, ऐसा समझना है। हाँ? यही उपासना का लक्ष्य ही है, उपासना का ध्येय है ये। हाँ? नाम में फल निहित है, सिद्धिदात्री। इतने दिन 9 दिन तपस्या कर ली, सब जो भी क्या क्या ध्यान किया, पूजा करी, जो उपवास किया, जो भी लोगों करते आए हैं और जीवन में कुछ भी करते आए हैं, वो सब का फल उसके हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है। वो सच्चिदानंद आत्मस्वरूपी चेतना हमारी वही देगी ये सब सिद्धियां। ये समझकर विश्राम करना है। नहीं तो मन में यही उथल पुथल चलता रहता है, अरे ये हासिल करें, ये प्राप्त करें, ये प्राप्त करो। वो दुनियादारी की चीज प्राप्त ना करो तो सिद्धियां प्राप्त करने की चक्कर में पड़ जाते हैं। तुम कुछ भी करो, अपने प्रयत्न से कुछ नहीं होने वाला है, सब होगा कृपा मात्र से। ये बात जान। इसका मतलब ये नहीं कि आलसी पड़े रहना, इसको गलत नहीं समझ। इसलिए सीढ़ी दर सीढ़ी गुरु कहते जाते हैं, ऋषि मुनि गुरु यही कहते हैं कि अच्छा ये करो, ये करो, ये करो। फिर एक एक सीढ़ी पर तुमको चढ़ा के ले जाते हैं, और एक सीढ़ी ऐसी आती है तब बोलते हैं नहीं अब सीढ़ी हो गया, अब विश्राम करो। सीढ़ी में कोई नहीं बोलता अब सीढ़ी पे विश्राम करो। जब मंजिल के अंदर सीढ़ी से चढ़कर ऊपर मचान में चले जाते हैं, फिर मचान में जाके बोलते हैं अब विश्राम करो, अब चढ़ने की चेष्टा न करो। इस तरह से सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते वक्त बोलेंगे ये करो, फिर बोलते हैं कि नहीं ये सो छोड़ो, अभी ये करो, अभी ये छोड़ो, ये करो। और जब भी तुम अपने अहंकार को पुष्ट कर देती हो, आप जब भी अपना अहंकार को पुष्ट कर देते हो कुछ कर कुरा के, तब वहाँ पर एक लट पड़ती है। मैं बोलते कि छोड़, तुम बहुत अहंकार में उलझ गए, अब इधर से हट। सो प्रकृति इस तरह हमें कदम कदम पर दिशा निर्देश देती जाती है जीवन में। हमें क्या करना, हर परिस्थिति में इतना ही ध्यान रखना है, जो भी मैंने पाया अपना प्रयत्न, अपना योग्यता के कारण नहीं, योग्यता जो भी मुझ में है वो भी ईश्वर का प्रसाद है। जो किया वो सब प्रसाद है। तो गलत किया, चलो हमने कुछ गलतियां करी जीवन में, वो हमारे में वो सामर्थ्य नहीं था, असमर्थ थे। और असमर्थ के भी माँ ही उनको सामर्थ्य देने वाली होती है। ये भी प्रार्थना पूर्वक हम निकल सकते हैं।
अपने असमर्थता को लेके दुखी नहीं होना, उसमें प्रार्थना हो जाती। और अपने प्राप्ति को लेकर के अहंकार में नहीं जूझना, उसमें समर्पण करते हैं। प्रार्थना और समर्पण। हाँ, चलिए अभी ध्यान करेंगे। हाँ, आराम से बैठो। रीढ़ की हड्डी सीधा रखे, गर्दन को दाहिने और बाएं। Keep your spine erect and then tilt your head towards the right and left. See if your shoulders can touch your ears. And tilt your head right and left and touch your shoulders. Tilt your head and lift your shoulder so that your ears can touch the shoulders. कंधों को ऊपर उठाइए और सिर को नीचे करें, और ऐसे करके फिर अब सीधा बैठ जाइए, कंधों को ढीला छोड़ दें, आंखें बंद कर लें। Keep your eyes closed. You are in the midst of a river of events, like the water flows continuously in a river. Events are flowing, pleasant, unpleasant events are flowing. You are standing steadfast in the river. The river of events. आप स्थिर खड़े हो नदी में, घटनाओं की नदी बहाव चल रही है। आप ज्ञान की स्थिरता से इसमें खड़े हुए हो। कोई आपके बाजू पकड़ के खड़े हैं, कोई डर नहीं है। सारी घटनाएं नदी की भाव जैसे बहता हुआ निकल चुका है, निकल रहा है। Events are flowing like the water in a river, and you have been held safely with steadfastness, standing in the events. एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ें। टेक ए डीप ब्रेथ इन एंड लेट गो। अब आप किनारे बैठ गए हैं, ऐसा भाव करें। नाउ यू आर सिटिंग इन द बैंक, वॉचिंग एंड विटनेसिंग द फ्लो ऑफ माइंड एंड द मेमोरीज एंड द इवेंट्स। आप किनारे बैठ चुके हो, सब घटनाएं मन की धारा बहती हुई जा रही है। आंखें बंद रखें। Become aware of the space all around you and inside of you. शरीर के भीतर बाहर जो निर्मल आकाश है, उसके प्रति सजग हो जाए।
अब 3 बार ओंकार का उच्चारण करते हैं। हम एक घटना वाली मन से ऊपर उठकर आकाश की ओर अपने मन को फैलाने लगे। आकाश की ओर अपना मन फैल जाए। Let us chant Om 3 times. Now, taking your mind out and becoming aware of the vast space with the sound Om that's above us and all around us. The sound is called mantra as it uplifts you from the mind to the space. मन को तारने वाली शब्द को ही मंत्र बोलते हैं। घटनाओं में, परिस्थिति में फंसी हुई मन को ऊपर अपना शुभ्र निर्मल चेतना की ओर ले जाने वाले शब्द ही मंत्र है। अब विश्राम करें। आपकी सारी क्षमताएं आपको प्रसाद के रूप में मिला के लिए आप धन्य भागी हो। जीवन में जो भी हम कर्म करते हैं वो भी सिद्ध हो ना हो, उसका फल भी माँ देगी, ईश्वर ही देंगे उचित समय पर। तो विश्राम करें, अपने कमियों को भी समर्पण करके विश्राम करें। Remember all the skills and achievements you have had in life. It has all been a blessing or a gift given to you. And let go of all your shortcomings. Even they will be relieved from you by the divine. The fruit of all your action will be bestowed on you at the right time. Repose in yourself. अपने आप में विश्राम करें।
You have received today the blessings, the grace of the divine consciousness. हमें आज सिद्धिदात्री की नव दुर्गा की कृपा प्राप्त हो चुका है। कृपा के किरणें हम पर बरस रही हैं। इस भाव से विश्राम। Rays of blessings, showers of blessings are on you. With this notion, repose in comfort. Another deep breath in and breathe out and relax more and more. Away from all the objects, getting into the central core of our being, of emptiness, of that space. Repose in there. अपने हृदय के अंतराल में जो चिदाकाश है, वही आप हो, उसी में विश्राम करें। कितने सारे जन्म लिए हों, क्या क्या किए हों, वो सब बाहर छोड़कर अपने अंदर की आकाश में, हृदय आकाश में विश्राम करें।
Shanti. धीरे से आंखें खोल दें. Slowly and gradually you may open your eyes.